वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने वर्चुअल लैन कॉन्सेप्ट का डिटेल स्टडी किया था। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वीलैन स्टडी किए। देन आफ्टर दैट वी आर टेकिंग द यूनिट नंबर 4, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो उसमें हमने नेटवर्क लेयर के जो फंक्शंस है एंड एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क लेयर, तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम IPv4 एड्रेसिंग का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द IPv4 एड्रेसिंग। सो IPv4 supports 3 types of different addressing modes. First one is the unicast, second one will be the broadcast addressing mode, and the third one will be the multicast addressing mode. So first we start with the first type of addressing mode, which is the unicast addressing mode. So in this mode the data is sent only to the one destination host. The destination address field contains the 32-bit IP address of the destination host. Here the client sends the data to the targeted server. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, सो इन दैट इट कंसिस्ट ऑफ 3 servers, server A, server B and server C is there, and one client is there. So this client will send a request to this server B, and after that the server B process that request and sends the response to this client, and it is connected through a simple switch or router through which all the servers and clients get connected. So in this unicast addressing mode, so data is sent only to the one destined host. Okay, तो इसमें at a time only one client will send the data or to the server, and the destination address field contains the 32-bit IP address. ठीक है, तो इसमें जो फ्रेम होगा, जो सेंड होगा डेटा फ्रेम, सो दैट हैज़ अ हेडर. सो इन दैट हेडर द 32-bit IP address of the destination field will be in that header of the frame. So here client can send the data to the targeted server. So in this fashion the working will be happen in this unicast addressing mode. Second one will be the broadcast addressing mode. So in this addressing mode the packet is addressed to all the host in a network segment. तो ये एड्रेसिंग मोड में जो भी पैकेट सेंड होगा फ्रॉम क्लाइंट, इट कैन बी अ ब्रॉडकास्ट टू द ऑल सर्वर्स. सो द डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड कंटेन्स अ स्पेशल ब्रॉडकास्ट एड्रेस दैट इज 255.255.255.255. सो दिस इज द एड्रेस विच इज़ यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस from the destination address. So when a host sees this packet on the network, it is bounded to the process it. Here the client sends the packet which is entered by all the servers. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. So that contains the server A, server B, server C is there. So these 3 servers are connected through the switch or the router, and there is only one client is there, suppose, and this client will send the data to this server. So that can be a broadcast data. So it can broadcast to all the servers at a time like that. तो इसीलिए यहाँ पे एरोज दिए. ठीक है, तो जो भी डेटा या पैकेट सेंड होगा बाय दिस क्लाइंट, इट विल ब्रॉडकास्ट टू ऑल द सर्वर्स. So that contains the broadcast address as a 255.255.255.255, which is known as a broadcast address. So like that this broadcast addressing mode will be work. And the third one will be the multicast addressing mode. So in this multicast addressing mode is a mix of the previous 2 modes. Means it is a combination of your unicast and the broadcast addressing mode. So here the packet is sent neither destined to the a single host nor all the hosts ऑन द सेगमेंट. ठीक है, तो जिस तरह से हमने देखा कि यूनिकास्ट एड्रेसिंग मोड में ओनली द पैकेट इज सेंड फ्रॉम द क्लाइंट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन सर्वर. ठीक है, एंड इन केस ऑफ ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग द क्लाइंट विल सेंड द पैकेट, दैट सेंड पैकेट विल बी received to the all the servers, that will be a broadcast.
So multicast addressing mode consists of the combination of both unicast and a broadcast. So in this addressing mode, the packet or the destination address contains the special address which start from 224.x.x.x and can be entered by more than one host. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. इट कंसिस्ट ऑफ अगेन 3 सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी and one client is there. This client and this server models are connected through a router, so that forms a network. So here server sends the packet which are entered by more than one server. So here the server B will send the packet, so this packet will be enter or it is received to more than one server, means in this case server A and server C is there. So this packet sent by server B will be received at the server A and server C at a time. So every network has one IP address reserved for the network number which represents the number or the network, and one IP address reserved for broadcast address. ठीक है, तो हर नेटवर्क में एक IP एड्रेस रिजर्व होता है for the network number that represents the network, because there are many networks in the internet, they are get connected. So to identify each network, so one IP will be reserved as a network number that represents the particular network, and one IP address is reserved as a broadcast address, so which represents all the hosts in that network. So that is the simple working of this multicast addressing mode. So your IPv4 address consists of these three categories: unicast, broadcast and multicast addressing. So the next topic is the binary representation. So the IP address is a 32-bit value which can be divided into the 4 octets. So octet means 8-bit, so the total 4 octets are there, means it is a 32-bit address is there. So the positional value method is the simplest form that convert the binary into the decimal. ठीक है, तो इसमें बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में, so that a binary octet contains the 8 bits. So each value of a bit can be determined by the position of a bit value 1 in the octet. Okay, so there is a total 8 bits are there like that, that is 111 111 11. So at the RHS side there is a LSB of bit, and in the LHS side there is a MSB of a bit. So it has a positional value because it is a decimal value, so we are written this binary number in powers of 2, like that, 2 raised to 0, 2 raised to 1, like that. So it is 2 raised to 0, that will be a 1, 2 raised to 1, that is 2, 2 raised to 2 are the 4, 2 raised to 3 are the 8, like that. So it will be a, for 8 bit it will be a maximum 128 is there. So the total value of the octet determined by adding up the position values of the bits. ठीक है, so जो total value हमें मिलेगा octet का, that will be the simply addition of this positional value by taking the powers of 2, that will be start from the 2 raised to 0 up to the n जितना ये octet होगा. ठीक है, so the value will be the 1 0 0 0 0 0 0, that is 128 plus 64, that is 192. Okay, so there is a table is there that represents the some values of this binary. To the respected positional values. So here values are given, that will be from 1 to 255, that is the maximum value, and here the positional values are given, that is 1 to 128 for 8 bit. So the next topic is IPv4 address classes. So the IPv4 address system is divided into the total 5 classes of IP addresses. All the 5 classes are identified by the first octet of IP address. ठीक है, तो IP एड्रेस सिस्टम को डिवाइड किया टोटल 5 क्लासेस में ऑफ IP एड्रेस. सो ऑल दिस 5 क्लासेस आर आइडेंटिफाइड बाय द फर्स्ट ऑक्टेट. तो फर्स्ट ऑक्टेट से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका IP एड्रेस
कौन से क्लास में है, ठीक है. देन विल टेक द वन एग्जांपल. So here different octets are given. Suppose it is a 4 octet, so that first octet is of a 8 bit, again second octet is of a 8 bit, third is again 8 bit, and fourth one is again 8 bit. So it is a total 32 bit IP address is there. So it contains the 4 byte because 1 byte consists of 8 bits. So the first octet referred here is the leftmost of all, ठीक है. तो ये फर्स्ट ऑक्टेट है. द ऑक्टेट नंबर हैज़ फॉलोज द डिसिपेटिंग डॉटेड डेसिमल नोटेशन ऑफ आईपी एड्रेस. So there is a decimal notation of that. So these binaries get converted into the decimal, which is the 192.168.1.152. So that is the 32-bit IP address, and it is in binary form. This. So the number of networks and number of hosts per class can be divided by the formula. So there is a formula to calculate the number of networks. So that is 2 raised to n network bits, and to calculate the number of hosts per network, so that will be the formula as 2 raised to host bits minus 2. So these are the two formulas to calculate the number of networks which are connected in a system, or number of hosts which are connected in a network. So we have easily calculate by using this formula. So in second formula, where we calculate the number of hosts, so when calculating the host IP address, 2 IP address are decrease, इसलिए हमने यहाँ पे -2 लिया है, ठीक है. बिकॉज दे कैन नॉट बी असाइन टू अ होस्ट. दैट फर्स्ट IP ऑफ अ नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क नंबर, ठीक है. तो फर्स्ट जो IP वो नेटवर्क नंबर के लिए रिजर्व है, एंड लास्ट IP जो है वो रिजर्व है ब्रॉडकास्ट IP के लिए, ठीक है. दैट्स वाई वी आर टेकिंग द -2 to calculate the host IP. Then we start with the IPv4 addressing. So first address is a class A address of IPv4. So in that the first bit of the first octet is always set to 0, ठीक है. तो इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट रहेगा, दिस ऑक्टेट इज नथिंग बट द 8 बिट मीन्स 1 बाइट. तो उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट में जो फर्स्ट बिट रहेगा दैट इज द MSB, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में. तो वो आपका 0 रहेगा, यहाँ रेड मार्क से दिखाया गया है, ठीक है. दस द फर्स्ट ऑक्टेट रेंजेस फ्रॉम 1 to 127. तो क्लास ए एड्रेस का जो रेंज है, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट का वो 1 to 127 है. सो मैक्सिमम इट विल बी अ 127 एंड मिनिमम इट विल बी द 1. सो द क्लास ए एड्रेस ओनली इंक्लूड IP एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 126 only. The IP range is 127 is reserved for loopback IP address. जो एक्चुअल रेंज है वो 1 to 126 है, लाइक दैट, ठीक है. तो इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट रहेगा, सो इन दैट द फर्स्ट बिट विल बी 0. सो वी कैन से दैट इट विल बी अ क्लास ए एड्रेस ऑफ IPv4. So that's why its range is from this 1 to this 127. So it is in binary and it is in decimal form. Second class of IPv4 addressing is the class B. So in class B, an IP address which belongs to the class B has the first 2 bits in the first octet is set to 10, ठीक है. तो जिसमें फर्स्ट जो 2 बिट्स रहेंगे और फर्स्ट ऑक्टेट इट विल बी सेट एज अ 10. सो वी कैन से दैट दैट इज़ अ क्लास बी एड्रेस ऑफ IPv4, ठीक है. तो यहाँ पे ऑक्टेट दिया है फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑक्टेट में यहाँ पे जो फर्स्ट 2 बिट्स है एट द MSB साइड इट विल बी अ सेट टू 10, जो रेड मार्क से यहाँ पे दिखाया है, ठीक है. सो इट्स रेंजेस फ्रॉम 128 to 191. So the class B IP address range is from 128 to 191, ठीक है. तो मिनिमम इट विल बी अ 128 and maximum will be a 191. So that will be the range for this class B addressing. Then the third type of addressing is a class C address.
So the first octet of class C IP address has a first 3 bits is set to be a 110. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट रहेगा उसमें जो फर्स्ट 3 बिट्स है दे आर सेट टू बी 110. देन वी कैन से दैट इट विल बी अ क्लास सी एड्रेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्टेट दिया है फर्स्ट ऑक्टेट, ठीक है, तो एट द MSB साइड यहाँ पे जो फर्स्ट 3 बिट्स है वो 110 है. तो ये आपका क्लास सी एड्रेस है IPv4 का. So the range for this class C address will be a 192 to 223. So the class C IP address range is from 192, that is a minimum, and the maximum it will be a 223. So that is the range of this class C addressing. Then next one, fourth will be the class D address of IPv4. So very first 4 bits of the first octet in class D IP address are set to 1110. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट रहेगा उसमें जो 4 नंबर्स रहेंगे फर्स्ट, सो दे आर 1110 जो रेड मार्क से यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, सो दैट विल बी इन डेसिमल 224 अप टू 239. सो दैट इज़ द रेंज ऑफ दिस क्लास डी IP addressing. So the class D IP address has a range of 224 to 239. So the class D is reserved for multicasting. तो ये जो class D एड्रेस है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व किया गया है. So in multicasting the data is not destined for a particular host. That's why there is no need to extract the host address from the IP address, and this class D doesn't have any subnet mask. ठीक है, तो ये जो क्लास डी एड्रेस है IPv4 का मल्टीकास्टिंग के लिए उसको रिजर्व किया गया है. देन विल सी द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ द फिफ्थ वन विच इज़ द लास्ट एड्रेस ऑफ दिस IPv4, दैट इज़ क्लास सी एड्रेस. सो दिस क्लास सी एड्रेस that is the IP class which is reserved for experimental purpose only for research and development or study of IP addresses. In this class the range is from 240 to 255. ठीक है, तो जो क्लास ई IP एड्रेस है वो रिज़र्व किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और फॉर द स्टडी ऑफ दिस IP एड्रेसेस. सो इट्स रेंज इज फ्रॉम 240, दैट इज़ द मिनिमम, to the maximum, that is 255. These are the range for this class C addressing. So like class D, this class is do not equipped with any subnet mask. ठीक है, तो इसको रिसर्च के लिए रिजर्व रखा है क्लास C एड्रेस को. सो दीज आर द टोटल 5 क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग. So the next topic of syllabus is the forwarding of IP packets. So in that there are 3 types of forwarding of these IP packets. So the first is the forwarding based on the destination address. So this is the traditional approach in which the forwarding requires a host or a router to have a forwarding table. ठीक है, तो इसमें जो पैकेट्स फॉरवर्ड होंगे तो उसके लिए फॉरवर्डिंग टेबल का यूज़ होता है. When a host has a packet to send or when a router has a receive a packet to be forwarded. ठीक है, तो जिसमें होस्ट अगर पैकेट सेंड कर रहा है और जो राउटर नेटवर्क में यूज़ किया गया है दैट रिसीव्स द पैकेट फ्रॉम द क्लाइंट और सर्वर. सो इट लुक्स इन दिस टेबल टू फाइंड द नेक्स्ट होप टू डिलीवर द पैकेट टू. ठीक है, तो इसमें फॉरवर्डिंग टेबल का यूज़ होता है. फॉरवर्डिंग टेबल में सेंडर एंड रिसीवर का IP एड्रेस होता है, so that if in network the different routers are get connected, so this router will receive the packets from the sender. So it will look in the forward table of the destination address, and then that packet will be routed towards the destination or towards the next router, like that. So that is the forward base on the destination address. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. ठीक है, तो इसमें एक पैकेट एज अ इनपुट किया गया है एक राउटर में. ठीक है, वेयर दिस M0, M1 एंड M2 मशीन्स आर गेट कनेक्टेड थ्रू अ राउटर. सो द एक्सट्रैक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस, तो ये जो पैकेट है इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो पहले ट्रेस होगा. ठीक है,
because every packet contains the header. So in header field the source and destination address is there. तो इसमें से ही एक्सट्रैक्ट करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस जो प्रोवाइड किया जाएगा सर्चिंग टेबल को. दिस इज़ द फॉरवर्डिंग टेबल. इट कंटेन्स द नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क होप आईपी एड्रेस एंड द इंटरफेस. ठीक है, इंटरफेस मीन्स किस इंटरफेस से ये पैकेट आया है. ठीक है, कौन से नेक्स्ट होप के आईपी एड्रेस पे इसको सेंड करना है. ठीक है, एंड द नेटवर्क एड्रेस. ठीक है, कौन से नेटवर्क से ये सेंड किया गया है. सो देयर इज़ N0, N1 एंड N2. these are the different networks. So this search table will search the next hope IP address and forward that IP address toward that next hope. So that is the forwarding table. So this interface number and the next hope addresses will be there, so to the other modules on protocols. So like that, there is a simplified version of this forwarding module. Second type will be the forwarding based on label. So in connectionless network, a router forwards the packet based on the destination address in the header of the packet. ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हेडर में सेंडर एंड रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है. ठीक है, सो जो कनेक्शनलेस नेटवर्क है इसमें राउटर जो है डेस्टिनेशन एड्रेस को सर्च करता है हेडर से. So on the other hand, in a connection oriented network, a switch forwards the packet based on the label attached to the packet. ठीक है, तो connection oriented network जो है that is the second type of network, because there are two types. One is connectionless and for second is connection oriented network. So in that a switch, okay, just like a router there is a switch. So the switch forwards the packet that is based on the label attached to the packet. इस पैकेट के साथ एक लेबल भी अटैच होता है. ठीक है, बाय दिस स्विच, एंड दिस राउटिंग इज नॉर्मली बेस्ड ऑन द सर्चिंग द कंटेंट्स ऑफ टेबल. सो स्विचिंग कैन बी डन बाय एक्सेसिंग द टेबल यूजिंग एन इंडेक्स. इन अदर वर्ड, routing involves the searching, switching involves accessing. When the forwarding algorithm gets the destination address of the packet, it needs to deliver into the mask column. For the each entry, it needs to apply a mask to find the destination network. Then it needs to check the network address in the table until the find match. The router then extracts the next hop address and the interface number to deliver the data link layer. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन लेबल के लिए. तो इसमें स्विचिंग टेबल का यूज़ होता है. दैट स्विचिंग टेबल कंटेन्स द इंटरफेस एंड द नेक्स्ट लेबल. सो हियर द पैकेट इज़ देयर. सो दिस पैकेट इज़ ट्रांसफॉर्म विद द लेबल. ठीक है, बाय दिस स्विच. ठीक है, तो स्विच में जैसे ही पैकेट रिसीव होगा फ्रॉम द क्लाइंट और द फ्रॉम सर्वर, दैट स्विच विल label out each packet and this will be passed into the switching table. ठीक है, so that switching table contains the label which is used as the index. ठीक है, तो ये जो लेबल्स यहाँ स्विचिंग से मार्क हो रहे हैं वो एक टेबल में, स्विचिंग टेबल में यहाँ पे इंटर होंगे एंड वहाँ पे एक इंडेक्स की जैसे ये यूज़ होंगे. दैट विल फ्रॉम 000 अप टू द दिस 1000. सो यहाँ पे जो लेबल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 004, दैट इज़ द लेबल. सो दैट हैज़ द इंटरफेस 2 एंड इट्स नेक्स्ट लेबल विल बी अ 0012 मीन्स 0012 पे इसको क्या करना है, रूट करना है. सो आफ्टर रिसीविंग दिस पैकेट, स्विच विल गिव द लेबल to that packet and that packet will be enter into the switching table with the interface and next label, and after that it will be routed to the destination. So destination के लिए जो label है वो 0012 है. So it will routed like that. And the third type will be the router as a packet switches. So the packet switches that are used in a network layer called as a routers. Routers can be configured to act as either a datagram switch or the virtual switch approach. Okay, तो router as a packet switches, तो इसमें routers का use होता है for sending the packet as a switches. So in that there are two configuration. First one is the datagram switch and second one will be the
virtual circuit switch. So that is the third method for forwarding the IP packets. So that will complete this forwarding of IP address topic. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ICMPv4 प्रोटोकॉल का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।